आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा वो वर्ड के ऊपर रहेगा। जैसे वर्ड, हाउ वी फॉर्म द वर्ड एंड हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ द वर्ड, है ना। तो इस सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा वर्ड। जैसे आप जानते हैं ना, पहले हमने फोनीम की बात की थी, लेटर की बात की थी। अब लेटर के बाद व्हेन वी मीट लेटर्स टू ईच अदर एंड देन देयर इज़ द वर्ड फॉर्मेशन, है ना। तो आज जो हम पहुँचे हैं वर्ड पर, आज हम बात करेंगे वर्ड के ऊपर, कैसे एक वर्ड बनता है, फिर वर्ड के कैसे हम काइंड्स निकालते हैं, हाउ कैन वी क्लासिफाई दी word. As you know that we have simple word, we have complex word and we have compound word. तो आज हम वो सब हम समझने वाले हैं। इंशाल्लाह आप साथ देंगे और मेरा वीडियो ज़रूर वॉच करेंगे आपके फ़ायदे के लिए। तो वर्ड है क्या, सबसे पहले हमें समझना होगा वर्ड है क्या। तो जैसे मैं समझता हूँ वर्ड, इट इज़ ईदर a single morpheme or more than one morpheme। क्या मैंने कहा? either it is a single morpheme or more than one morpheme। एक वर्ड या एक मॉर्फ्यूम होता है या मोर देन वन मॉर्फ्यूम। तो यहां लफ्ज मॉर्फ्यूम हमें समझना है। मॉर्फीम क्या होता है, मैं फिर से दोहराता हूं। मैंने कहा कि वर्ड का मतलब है या एक मॉर्फ्यूम या मोर देन वन मॉर्फ्यूम, या एक से ज़्यादा मॉर्फ्यूम। तो यह हमें मॉर्फ्यूम समझना है। इस आप लिख सकते हो, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। वर्ड, इट इज़ ईदर अ सिंगल मॉर्फ्यूम और मोर देन वन मॉर्फ्यूम। तो यहाँ से हमें क्या समझना है? मॉर्फ्यूम। मॉर्फ्यूम तो मॉर्फ्यूम हमें समझना है। मॉर्फ्यूम, इट इज a unit of phonemes। It is a unit of phonemes। ये phonemes का यूनिट है, ये phonemes का यूनिट है। तो सबसे पहले हमें फोनीम को भी समझना होगा। वर्ड को समझने के लिए मॉर्फ्यूम, और मॉर्फ्यूम को समझने के लिए फोनीम, और फोनीम के बाद हमें ऑटोमेटिकली वर्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड समझ आने वाला है। फोनीम मैंने आपको समझाया था। फोनीम इज द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ वर्ड। फोनीम इज द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ वर्ड, स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ वर्ड। मैं फोनीम को समझाता हूँ। Phoneme, it is a smallest unit of sound। फिर से, phoneme means smallest unit of sound। Phoneme means smallest unit of sound। When we use letters in words, they provide us sounds। Each sound is called phoneme। फिर से,
When we use letters in the words, yes, they provide us sounds, and each sound, smallest sound, each sound, as 26 letters give us 44 sounds, and each sound is called phoneme. Each sound is called phoneme. Example, एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहां टील। मैंने क्या लिखा? टील। तो टील में अगर हम देखेंगे ना, इन वर्ड टील देयर आर 4 लेटर्स। टील में 4 लेटर्स है, टी, ई, ई एंड एल, 4 लेटर्स, 1 2 3 4। इन वर्ड टील देयर आर 4 लेटर्स, लेकिन साउंड्स आर ओनली 3। जैसे ट, ई एंड ल, टील, t, e and l, teal means one sound, second and third. So teal is a word in which we use 4 alphabets, but we use only 3 sounds, and each sound is called. Now take the example of eat. Take the example of eat. This eat, you see, is having 3 letters. This word eat is having 3 letters, that is E and T. Now think about it phonetically. E and T is also eat, right, phonetically. So here it has 1 and 2. So it has 2 phonemes, 3 letters, right? And this eat as a sound is also called morpheme. Is also called morpheme, and morpheme cannot be divided further. You can see it cannot be divided further. We cannot divide it further. Okay. Now this it has meaning. You also see that this it can be used anywhere without support, right? But if we add ing with this word eating, yeah, then we can say it has 2 parts. Then we can, if we add ing with the eat, it becomes eating. Then eating can be divided in 2 parts, that is eat and ing, right? So we can say eating is a word having 2 morphemes, right? That is eat and the second is ing. One thing. Second thing, this eat is independent. This eat can be used anywhere. It does not need support of any other morpheme for the meaning. But think about this ing, right? It is meaningless unless we use it with the eat. It is meaningless unless we use it with the eat. This eat is independent. It can be used independently, but this ing cannot be used without support of uh, any other part for the meaning. For example, eating. You can understand it very thoroughly. This is eating. It has 2 parts. One is eat and the second part is ing. Can we say that this eat is independent and this ing is dependent? This ing has no meaning unless it gets support from the eat, and eat is independent. We can use this eat without this ing, right? So we can say this eat is free and this is bound. This is, so we can say morpheme has 2 kinds. It may be free, it may be bound. Morpheme
has two kinds, free and bound. Free and bound. Free morpheme is that morpheme which is independent, which can be used anywhere. It does not need support. And this bound morpheme is that sound, bigger sound made of the phonemes which can't be used independently, because if it is used independently, it cannot give us meaning. It cannot give us meaning. तो यहाँ तक आप आपने समझ लिया phoneme. Phoneme is the smallest sound given by the letter when the letter is used in the word. One thing, when phonemes, sounds meet together, that form the bigger sound, that is called morpheme. Morpheme is of two kinds, free morpheme and bound morpheme. Free morpheme is that sound which can be used independently, which is meaningful, and bound morpheme is that sound, bigger sound, which cannot be used without free morpheme. It cannot give us meaning independently. अब यहाँ हम अब वर्ड तक पहुंच गए. अब अगर हम वर्ड की बात करेंगे, तो वर्ड जो है, इट हैज आल्सो थ्री टाइप्स. सिंपल वर्ड, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स वर्ड, एंड द थर्ड इज कंपाउंड वर्ड. Unless we understand phonemes and morphemes, we cannot understand the simple word and complex word and compound word. Though it is very deep, but we have to understand it together. अब समझ लीजिए, अब सिंपल वर्ड किस वर्ड को कहते हैं और कॉम्प्लेक्स वर्ड किस वर्ड को कहते हैं और कंपाउंड वर्ड किस वर्ड को, समझना, आसान से समझना. पहले हम सिंपल की बात करेंगे, सिंपल वर्ड की बात करेंगे. We have to understand simple word, complex word and compound word. Simple word, बस अगर आप वर्ड समझ गए, सिंपल वर्ड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, इसके बाद जो हम ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे नाउ देन वी कैन यूज अ वर्ड इन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, राइट. तो फिर वही ग्रामर होता है ना, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस ग्रामर है. फिर अलग अलग हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना है, तो उसी को ग्रामर कहते हैं. लेकिन बुनियाद, अगर कोई ना दिल से ग्रामर पढ़ना चाहता है, तो मैंने बुनियाद डाली, मैंने लेटर से स्टार्ट किया, मैं वर्ड तक पहुंचा. पहले मैंने आपके फोनीम के बारे में बोला, फोनीम को जब इस्तेमाल करते हैं लेटर में, उसके बारे में, फोनीम जब मिलते हैं तो मार्फियम बनता है, उसके बारे में बोला. अब जब मार्फियम आपस में मिलते हैं तो एक वर्ड बनता है. तो आप देखो, बुनियाद मैंने डाली है ना, आपको समझने की कोशिश आपको करना है. अब देखो, सिंपल वर्ड किस वर्ड को कहते हैं? सिंपल वर्ड. और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि unless you understand morpheme, you cannot understand the simple word, complex word and compound word. Simple word, it is made of either single free morpheme. ये देखो, it is made of either single free morpheme or more than one bound morpheme. आप समझ गए ना? तो देर आर टू कंडीशंस इन सिंपल वर्ड. आपको दो कंडीशंस को याद रखना है. एक कंडीशन है कि या इसमें एक ही मॉर्फीम है एंड दैट इज फ्री, या इसमें एक से ज्यादा मॉर्फीम्स है बट ऑल आर बाउंड. एग्जांपल, अगर मैंने यहां लिख दिया टॉल, मैंने क्या लिखा? टॉल. एक ही वर्ड है, सॉरी एक ही वर्ड है, इसमें एक ही मॉर्फीम है. देखो, टॉल, टॉल. जैसे मैं आपको यहां भी इस चीज को समझा सकता हूं.
या इसी तरह मैंने लिखा अभी ईट, आपको समझ में आने वाला है क्योंकि ईट मैंने आपको पहले भी बोला है। अगर हम ईट की बात करेंगे, ईट की बात, ईट में सिंगल मॉर्फ्यूम है बट इट इज फ्री, मीन्स दिस ईट इज मीनिंगफुल, इट कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली, है ना। लेकिन वी कैन से इट इज simple word because it is having single free morpheme. Single free morpheme. In a simple word is that word which is having single free morpheme. Think about this eat. It is single morpheme but it is free. It is meaningful. Or we can say n, one morpheme but it is free. Or tall, one morpheme but it is free. Tall is a morpheme, it is also a word, and is morpheme, it is also a word, and eat is also morpheme, it is also a word. But all these words are those which are made of single phoneme, single morphemes, but all are free, and it is free, can be used without support. Tall, it is made of single morpheme, it is free, can be used without any support, and this it has also that condition. तो ये एक कंडीशन होगी, ये एक कंडीशन, इधर सिंपल वर्ड इज मेड ऑफ सिंगल फ्री मॉर्फ्यूम, सिंगल एक ही मॉर्फ्यूम है, एक वर्ड में एक ही पार्ट है, एक ही सिलेबल है, एक वर्ड में एक ही पार्ट है, एक ही सिलेबल है, लेकिन दैट पार्ट इज फ्री, दैट पार्ट इज फ्री, दैट पार्ट इज मीनिंगफुल, that part is independent, that part does not need the support of any other part for meaning. यहाँ तक आप समझ गए ना। अब दूसरा पार्ट समझना है, और और more than one bound morpheme, more than one यानी एक से ज़्यादा बाउंड मॉर्फ्यूम, या एक ऐसा वर्ड जिसमें एक से ज़्यादा मॉर्फीम्स है बट ऑल आर बाउंड। मिसाल के तौर पर, मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा, मिसाल के तौर पर मैं एक वर्ड यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेता हूँ। मैंने लिखा मदर, मूज, हाँ मदर, माँ बाप, पहले माँ का नाम फिर बाप का नाम। देखो दुनिया में भाई बहन है ना, चचा चाची, चाचा चाची, नाना नानी, हर एक जोड़े में पहले मेल का नाम उसके बाद फीमेल का नाम। लेकिन माँ बाप, पहले जब हम पेरेंट्स की बात करें पहले माँ का नाम फिर बाप का नाम, माँ बाप। दिस इज, हम क्या बोलेंगे कि दिस इज द स्टेटस ऑफ आवर मदर। देखो माँ द, अगर हम माँ द की बात करेंगे इट हैज आल्सो टू पार्ट्स, एक है माँ और दूसरा है द। इफ यू अंडरस्टैंड दिस म इज बाउंड, इट हैज नो मीनिंग, दिस द इज आल्सो meaningless, so we can say it is b plus b, bound plus bound, means mother is that word which is having double or more than one morphemes but all are bound. This ma is bound, this the is bound, means b plus b. This ma has no meaning, this the has no meaning. Yes, this ma gives meaning when it is supported by the, and this the has the meaning when it is supported by the. If this mother is divided, this the loses its meaning and this ma also loses. So it is also simple word because it is made of more than single morpheme but all are bound. So there are only two conditions of the simple word, means you have to understand only two conditions of the simple word. One condition, it is of single morpheme but that is free. Second condition, it is made of more than one, it has multiple morphemes but all are bound. Yes, this is the simple word. शॉर्ट में सिंपल वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसमें या तो एक ही मोफीम है लेकिन वो मीनिंगफुल है, फ्री है, इंडिपेंडेंट है, या एक ऐसा वर्ड जिसमें दो मोफीम्स है, तीन है, चार है, एक से ज़्यादा है, लेकिन ऑल आर बाउंड, ऑल आर मीनिंगलेस।
if they are divided, they cannot give us the meaning, unless they meet together. They give meaning when they meet together. जैसे ma has no meaning, the has no meaning. Yes, ma and the when meet together, that gives the meaning ma, right? Okay. Up second part, complex. Complex word. अब समझना, it is made of free plus bound. It has only single condition. It is that word in which we have single free morpheme along with other bound morphemes. सिंपल वर्ड में एक ही फ्री मॉर्फ्यूम, लेकिन कोई और बाउंड मॉर्फ्यूम नहीं. Word has a single free morpheme, right? Or it has more than morphemes, but all are bound. लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, the word is not of single morpheme. इसमें ये कंडीशन ही नहीं कि वर्ड में सिंगल मॉर्फ्यूम हो. यस, इसमें क्या है, इसमें एक सिंगल मॉर्फ्यूम है, लेकिन जो बाकी है वो बाउंड है. मिसाल के तौर पर मैंने यहां लिखा ईटिंग. क्या लिखा? ईटिंग. इट हैज टू morphemes. One is eat and second is ing, right? So this is free and this is bound. हो गया f plus p. This eat is free, can be used without this ing, and this ing is bound because it has no meaning unless it gets support from the eat. So any word which is having multiple morphemes, right? But there must be one single morpheme. There must be one single morpheme, right? And the third is compound. Third is compound. Compound word. It is made of double free morphemes. इसमें इस वर्ड में डबल फ्री मोर्फीम होते हैं. जैसे मैंने लिखा टाइप राइट. अगर मैं बात करूंगा टाइप और राइट की, टाइप राइट, this type is meaningful, this right is also meaningful. This type can be used without this right and this right can be used without this type. या मैं लिखता हूं sunshine. Sunshine, this sun can be used without shine and shine can be used without sun, and sun has its own meaning and shine has its own meaning. So today you understood simple word, complex word and compound. मैं रिपीट करता हूँ एक बार, उसके बाद अब मैं क्लास को ख़त्म कर लेता हूँ. सो समिंग अप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूरा लेक्चर जो मैंने आज तक 3 लेक्चर्स और आज का लेक्चर हो गया 4 लेक्चर डिलीवर किए हैं, मैं उनका समिंग अप यहाँ करना चाहता हूँ. तो मैंने क्या कहा था कि जो लेटर है, इंग्लिश की जो बुनियाद है वो लेटर पर है. वो लेटर इज़ just like a figure, it has no sound unless we use the letter in the word. When we use letter in the word, that gives us a sound, and that sound is known as the phoneme. And phoneme is of 44. We can say that letters give us 26 letters give us 44 phonemes, 44 sounds known as the phonemes. And phonemes, when you use it together, that form the bigger sound, and that bigger sound is called the morpheme. And morpheme is of 2 types: free morpheme and bound morpheme. And free morpheme is that bigger sound or the unit, bigger unit of the phonemes which is meaningful, and bound is that part of that sound which is meaningless. Yes, that bound morpheme gives the meaning only when that is supported by the free morpheme, right? And then these morphemes gave the rise of words, and words are of 3 types: simple word, compound word and complex word. Simple word is that word which is having either single free morpheme or a word
which is having more than one morphemes, but all are bound. And complex word is that word which is having multiple morphemes, but one morpheme is free, others are bound. And the compound word is that word which is also made of multiple morphemes, but double, means two morphemes are free. And this was the lecture. This was the summing up of my 4 lectures. Hope you will fully understand. Thank you very much.